गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल टेस्ट हाउस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे टॉयज़, हेलमेट्स, एयर कंडीशनर्स और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके ऊपर जो है नेशनल टेस्ट हाउस को जिम्मेदारी दी है कि उनकी जो टेस्टिंग होगी या उनकी क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो नेशनल टेस्ट हाउस जो है वो करेगा। तो उसकी प्लानिंग कैसे की जा रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इन प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्टिंग की जाएगी और उनसे उनकी क्वालिटी का पता लगाया जाएगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो कि नैनो स्केल्स पर किया जाता है, जैसे कि 1 से 100 नैनोमीटर्स तक के स्केल पर, जैसे आपके एटम्स जो है उनका यूज़ करते हुए उस लेवल पर जब जो आपका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसकी बहुत ही मतलब छोटे लेवल पर जो आपके जो है स्मॉल थिंग्स हैं उनके ऊपर जो है रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है, उससे जो है आपके जो है प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी को या फिर क्वालिटी का जो है पता लगाया जाता है। अब कैसे काम करेगी ये नेशनल टेस्ट हाउस की जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो ये प्लान है? अब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कॉस्मेटिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर आइटम्स या डिजिटल अप्लायंसेस जो है उनकी जो है क्वालिटी का पता लगाया जाएगा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी स्टूडेंट्स को, ताकि वो उसमें रिसर्च कर सकें। फिर एक नैनो मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने का भी प्लान किया जा रहा है एनटीएच के अंदर ही, ताकि जो है असेसमेंट की जाए इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कि उनकी क्वालिटी कैसे है। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से क्वालिटी तो कई बार अच्छी होती है, लेकिन जब नैनो लेवल पर जब टेक्नोलॉजी का जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी को देखना, उसकी क्वालिटी को देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमारी क्वालिटी जो है वो सुपीरियर रहे। अब नेशनल टेस्ट हाउस क्या है? एक बहुत पुरानी 109 साल पुरानी गवर्नमेंट क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है। 1912 में इसको साउथ कैलकाटा के अलीपुर में बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी जो है आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को में जो है टेस्टिंग करती है उनके प्रोडक्ट्स की। तो अब इसका जो है वो बाकी अप्लायंसेस पर भी टेस्ट करने की इसमें बात की जा रही है। ठीक है, so now let us see this topic in English. National Test House. So the central government is planning that they will use the facilities of National Test House for quality assurance of toys, helmets, air conditioners, and several other products. So this National Test House will be using nanotechnology to see the quality of the products which will be delegated to them. So once just imagine that an MSME has produced a toy, then that particular toy will go to national test house, and they will use and they will apply nanotechnology to certify its quality. So this nanotechnology is any science which is related to the study of materials which are very small, about 1 to 100 nanometers, and based upon that the exact quality of that product can be identified. So what will be done in this by this national test house? They will invest in developing this nanotechnology, and they will use this nanotechnology to test such items which will be delegated to them for certification. NTH will also provide scholarship to students who of engineering and MSc, so that they can research in nanotechnology further, and they can bring down the costs of nanotechnology use. And a nanotechnology and a nanomaterial testing laboratory is also being envisaged, so that that laboratory can be used to certify those products. And this, what is this national test house? It's a very old, almost 109-year-old government quality assurance laboratory. It comes under the Ministry of Consumer Affairs. It was created by the British Indian government in 1912 at Alipur in South Kolkata, or South Calcutta at that time. Okay, so now let us see the next topic, which is satellite phones. तो अभी आपको पता है iPhone 13 जो है उसके ऊपर बात की जा रही है कि उसमें अगर कभी सेलुलर नेटवर्क नहीं हुआ तो भी वो कॉल कर पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी क्या होती है? सैटेलाइट फ़ोन्स में यूज़ की जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, कि बिना किसी सिम कार्ड के भी आप कॉल कर सकते हो। तो होता क्या है कि डायरेक्टली वो सैटेलाइट के साथ फ़ोन जो है वो कनेक्ट करता है और उसके बेसिस पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब सैटेलाइट आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो तो आप किसी भी रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट लोकेशन में भी हो गए आप अर्थ के, तो आप कॉल कर पाओगे, और वो भी नॉमिनल कॉस्टिंग पे या फिर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्या होता है, सैटेलाइट फ़ोन क्या करता है
जो एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है स्पेस में, जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होती है, उसका यूज़ करते हुए कॉल जो है वो फैसिलिटेट करता है। सबसे पहला सैटेलाइट फ़ोन जो है वो मोटरोला ने लॉन्च किया था 1989 में। तो ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप आईफोन लेके आ रहा है। वैसे भी आईफोन का भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो लेके नहीं आता है। आई एम सॉरी फॉर दोज हु आर हैविंग एन आईफोन। सो कम्युनिकेशन कैसे फैसिलिटेट होगी? तो लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो में जो जो सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रही होती हैं, जो 500 किलोमीटर के रेडियस में अर्थ के सरफेस से, तो उन सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि वो बहुत पास हैं। ठीक है, इन जनरल जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होती हैं वो 36,000 किलोमीटर सरफेस से दूर होती हैं, तो उससे कम्युनिकेशन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट फ़ोन्स की कम्युनिकेशन होती है, वो इन पास वाली लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का यूज़ करते हुए की जाती है। इसी का यूज़ करते हुए आईफोन जो है ये भी यूज़ करेगा यही टेक्नोलॉजी। और अगर सेलुलर नेटवर्क नहीं हुआ किसी लोकेशन पर, जो कस्टमर्स हैं वो इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Satellite phones. So of course this iPhone has not been launched yet, but there is a buzz in the market that iPhone could be launching this satellite connectivity so that the customers can make a call if they do not have any cellular network in their phone. Okay, so what is this satellite phone? So generally satellite phone is not a new technology. It has been in existence since 1989 when the company named Motorola launched the first satellite phone on the at global level. This satellite phone utilizes telecommunications satellites, and it allows the phone to receive and make calls anywhere in the world. So generally there are limitations to your cellular networks. Okay, so if there is no network in your phone, you cannot make a call generally. Okay, but in this satellite phones you can make a call even if you are in the remotest part of the world, or even in an uninhabited island in Pacific where there is no cellular network. You would be able to make a call through even at that location through the use of satellite technology. So how this satellite phone is operated? So generally it uses a low earth orbit satellite which is operating at roughly 500 kilometers from the earth's surface. Otherwise the conventional communication cellular network is using the traditional satellites which are stationed higher at 36,000 kilometers. But what happens is, in this cellular network case, because the satellite is located at such a height, at about 36,000 kilometers, the time needed for data to be sent and returned is very high in comparison to low earth satellites, low earth orbit satellites, because they are operating at a very close location. Okay, so now let us see the next topic, which is national farmer database. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक डिजिटल डेटाबेस जो है 5.5 करोड़ फार्मर्स का उन्होंने बना दिया है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक टोटल 8 करोड़ फार्मर्स का जो है वो डिजिटाइज्ड डेटाबेस वो बना देंगे, जब वो स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स का डेटाबेस भी अपने इस डेटाबेस में इंक्लूड करेंगे। तो होगा क्या कि अभी सेंटर ने क्या किया है कि जो जितनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जो फार्मर्स रजिस्टर्ड हैं, जैसे पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना, उन सब के डेटा को तो वो डिजिटाइज कर चुके हैं। अब वो स्टेट्स को अर्ज कर रहे हैं कि आप भी जो अपने लैंड रिकॉर्ड्स का डेटा है जो आपके पास, वो हमारे को उससे शेयर करो, ताकि हम एक 8 करोड़ फार्मर्स का डेटाबेस जो है वो इस साल के एंड तक जो हम जनरेट कर लें। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, क्यों ज़रूरत है ये करने की? सेंटर का कहना है कि डिजिटल एग्रीकल्चर हमारा एक सपना है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, और जुलाई में गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये एक्सेप्ट किया कि हम टारगेटेड सर्विस डिलीवरी चाहते हैं, ताकि हायर एफिशिएंसी जो है वो हम लेके आ सकें, और एक एग्री स्टैक डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। उसमें क्या होगा, सारे डिजिटाइज्ड फार्मर्स हैं, सबका डेटा गवर्नमेंट के पास पड़ा है, तो सब्सिडी देनी है या कोई स्कीम चलानी है तो टारगेटेड हो सकती है वो। ठीक है, जब आपके पास एग्जैक्ट डेटा पड़ा है, आपके पास एक आपका जो फार्मर है उसके साथ आपका डायरेक्ट लिंकेज जब एस्टैब्लिश हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो डायरेक्टली उनके साथ डील कर सकते हैं, बीच में किसी इंटरमीडियरी, बिचौलिए या आड़तीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सारा बेनिफिट है वो फार्मर तक डायरेक्ट पहुंच सकता है। फार्मर अगर कुछ कम्युनिकेट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि डिजिटाइज डेटाबेस है, बीच में किसी की भी जरूरत, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स की भी मोस्टली जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छा रिफॉर्म होगा अगर गवर्नमेंट ही कर पाए, क्योंकि अभी क्या होता है, जो गरीब फार्मर होता है
वो तो जो है गवर्नमेंट के साथ बात ही नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट के साथ वो कंटैक्ट में ही नहीं है, ठीक है। जब ये डिजिटाइज कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को पता होगा कि कौन सा फार्मर जो है वो कैसे स्टेटस पर है, जो है उसको फिर वो उसी हिसाब से वो ट्रीट कर पाएंगे, ठीक है। अब कंसर्न्स इसमें जो है वो एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि प्रिवेसी और जो है कंसेंट के कंसर्न्स हैं, तो फार्मर का डेटा जब गवर्नमेंट यूज़ करेगी तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकती है, तो कुछ ऐसे प्राइवेसी के कंसर्न्स जो है वो एक्टिविस्ट बता रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। नेशनल फार्मर डेटाबेस. The center has proposed that they will be creating a record of 5.5 crore farmers, and they are expecting that this will be increased to 8 crore farmers by the end of this year, because they will be accommodating the state land record database also. How this will be done? Currently several central government schemes are being undertaken, like PM Kisan Soil Health Card and insurance scheme of PM Fasal Bima Yojana. So approximately 5.5 crore farmers are linked with these schemes. So the government has already digitize their database, they have collected their database, and the government is requesting the states to also share their land record database which they are maintaining with them, so that the number of farmer database with the central government can be increased to 8 crores. Okay, so the government has said that they plan to launch an agri-stack digital agriculture ecosystem. In what will happen in this, that targeted service delivery will be facilitated, so it will be very efficient. Okay, once the central government will get the database of farmers, they will be able to see the health of a farmer in terms of economic health, of course, and how the farmer is performing, which farmer needs more protection, and what are the needs of a farmer. So basically a direct linkage between the central government and the farmer will be established, and the need to take the services of intermediaries such as aadhiyas, money lenders, banks, or even any other, even the state government, that will be eliminated. So once this central government will develop this farmer database, they will be able to ensure that the service delivery will be targeted and efficient. Okay, of course there are concerns also. Activists are raising that there will be privacy and consent concerns. Farmers may not be able to understand why the government is taking up this database, and what and if they should provide their consent or not. So there are privacy concerns, especially in the absence of personal data protection bill. Okay, so now let us see the next topic, which is health impacts of climate change. तो कुछ ऑडिटर्स हैं, उन्होंने एक जॉइंट एडिटोरियल लिखा और गवर्नमेंट को बोला है कि आप बहुत जल्दी जो है एक अर्जेंट स्टेप्स लो, उसी तरह से आप क्लाइमेट चेंज को डील करो जैसे आपने कोविड पैंडमिक को अर्जेंसी के साथ डील किया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के भी बहुत ज़्यादा एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, क्योंकि हमारी एक्सट्रीम हीट इवेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उससे हमारी क्रॉप पैटर्न्स पे चेंज आ रहा है, यील्ड्स कम हो रही हैं, वाटर की स्कार्सिटी आ रही है, और कई जगहों पर एक्सट्रीम बारिश देखने को मिल रही है। उससे क्या होता है, फूड शॉर्टेजेस हो जाती हैं और आपकी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आने लग रही है, ठीक है। हेल्थ पे इम्पैक्ट भी हो रहा है। WHO कह रहा है कि 2.5 लाख डेथ होंगी एक्स्ट्रा जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फैक्टर्स, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया, हीट स्ट्रेस, इन सब की वजह से 2030 से 2050 के बीच में 2.5 लाख एक्सेस डेथ्स होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अब उसमें उन्होंने बताया कि हायर टेम्परेचर से क्या क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, रीनल फंक्शन लॉस, स्किन की इश्यूज हो सकते हैं, इन्फेक्शंस, मेंटल हेल्थ आउटकम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हीट की वजह से, हायर टेम्परेचर की वजह से होती हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. So in a first of its kind effort, more than 220 leading health editors, they have written a joint editorial, and they are asking the governments of the world to take immediate and more ambitious climate action so that we can prevent the global rise in temperatures beyond 1.5 degrees Celsius. Okay, so they are urging that these governments should treat the climate change with the same kind of urgency that they have dealt with the COVID-19 pandemic. So why they are saying that there is a need for urgency? Because they're saying that the health impacts of climate change are immense, both direct and indirect, and extreme heat events are creating direct health impacts on people. Changing crop patterns, declining yields, water scarcity, and extreme precipitation is creating havoc for the humanity. Food shortages and malnutrition is causing
are one of the or some of the major side effects of rising temperatures. WHO is predicting that there will be 250,000 excess deaths between 2030 and 2050 just because of climate change induced factors. Okay, so high temperatures are also leading to several health diseases such as increased dehydration, skin issues, tropical infections, adverse mental health outcomes, etc. Okay, so there is a need to treat this climate change as a direct contributor of health deterioration. Okay, so that's why they have written this joint editorial. And why I have included this particular topic in your current affairs PDF, because you can quote this in your mains answer, that the leading health editors are considering this climate change as a direct bearer of health issues in our society. So you can utilize the words or the data that is mentioned here in your answers. Okay, so now let us see the next topic, which is code for creditors under IBC. तो आपको पता है IBC क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया. उसमें क्या होता है कि आपका जो कोई एक दिवालिया घोषित हो जाता है, जो कोई बिजनेसमैन समझ लो, तो वो कॉर्पोरेट डेटर है. ठीक है, उसको हम कॉर्पोरेट डेटर कहेंगे. तो उसने जिससे लोन लिया हुआ है वो सब क्या है, उसके क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. तो जब उसकी दिवालियापन आ जाता है, जब दिवालिया निकल गया होता है उसका, तो जब उसका जब सेटलमेंट हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं आईबीसी के अंदर, जो उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनमें से उनकी एक कमेटी बना दी जाती है. ठीक है, समझ लो उसके 100 लोगों से उसने लोन लिया हुआ था, तो हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी. तो वो 5 लोगों की जो कमेटी है वो 100 लोगों के बेसिस के बिहाफ पर डिसीजंस ले रहे हैं कि ये जो पर्सन दिवालिया हुआ है, जो कॉर्पोरेट डेटर, वो कैसे हमारे को पे करेगा और किसको कितना कितना पैसा मिलेगा. ऑफ कोर्स अब सबको पूरा पैसा तो मिल नहीं सकता, क्योंकि उतना पैसा है ही नहीं उसके पास. तो किसको कितना पैसा मिलेगा ये डिसाइड जो है वो कमेटी करती है. तो उस कमेटी ने जो डिसीजन लिया वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता है. ठीक है, जो 5 लोग डिसीजन लेंगे वो 100 के ऊपर बाइंडिंग होगा. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई जो कमेटी जो है वो कैसे डिसीजन लेगी, कितना जो है वो सबको मतलब मिलेगा पैसा, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है. ठीक है, तो उनके डिसीजन जो है वो समझ लो एक तरह से एक तरफा डिसीजन होते हैं. तो सबको 100 को मानने ही पड़ेंगे वो. ठीक है, तो इसीलिए जो है अब कहा जा रहा है कि कोई एक एटलीस्ट फॉर्मेट तो होना चाहिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होना चाहिए कि ये कमेटी डिसीजंस कैसे लेगी. ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि इनके ऊपर एक आप ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बना दो कि ये कमेटी डिसीजंस कैसे लेगी, ताकि ट्रांसपेरेंट वर्किंग हो, इनकी फेयर वर्किंग हो, सारे क्रेडिटर्स को जो है वो मौका मिले, उनके पैसे जो है वो जितने मैक्सिमम उनको मिल सकता है वो लेने का उनको मौका मिले. ठीक है, तो अब क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ लैंडर्स का देखा गया है कि वो जब ये इस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में पहुंचने से पहले ही वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कमेटी बन गई तो हमारा पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए अटक जाएगा, तो जितना पैसा हो सकता है हम अभी से ही निकाल लेते हैं इससे, जो हमारा डेटर है. अब होता क्या, जब वो पैसा निकाल लेते हैं तो कॉर्पोरेट डेटर जो पहले ही दिवालिया, उसके पास पहले ही कम पैसा है, उसमें से जब वो जल्दी देना पड़ेगा उसको, तो उसकी वैल्यू और कम हो जाती है. ठीक है, और इसकी वैल्यू कम होने की वजह से और ज़्यादा टाइम लगता है. तो आईबीसी की विंडो तो ये कहती है कि आपको 180 दिन के अंदर जो है वो पूरी इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को खत्म करना है. लेकिन 75% केसेस में देखा गया है कि 270 दिन की जो टाइमलाइन है, अब ऑफ कोर्स ये 270 दिन कहां से आया, 180 दिन का तो वैसे कहा गया है कि इसके अंदर कंप्लीट करनी है. लेकिन कुछ केसेस में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बन के कह सकता है कि चलो आपको मैं 90 दिन का और टाइम देता हूं, क्योंकि आपकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, तो आप इस 270 दिन के अंदर आप इसको टाइमलाइन में आप जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को खत्म करो. ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो कि एक रेयर इवेंट है, जो कि मतलब कम होना चाहिए. एनसीएलटी जो है हर केस में थोड़ी कि एनसीएलटी जो है वो आपको एक्सटेंशन देता रहेगा. तो एक एक्सेप्शन जो थी उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है. 75% जितने भी केसेस हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के, वो ये 270 दिन की टाइमलाइन तक पहुंच जाते हैं, जबकि जो है 180 दिन की टाइमलाइन है. तो इसको जो ख़त्म करने के लिए, इस डिले को ख़त्म करने के लिए एक कोड ऑफ फॉर क्रेडिटर्स बनाने की बात की जा रही है. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया क्या है, आपको पता है ये 2016 में बिल आया था, उसमें पास हुआ था, उसकी वजह से ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया बना है. तो ये कंपनीज और इंडिविजुअल्स दोनों के ऊपर जो दिवालियापन होता है
जो इंसॉल्वेंसी होती है उनसे डील करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो 180 दिन का पीरियड है जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी को कंप्लीट करना होता है, लेकिन ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया एनसीएलटी अलाउ कर सकता है कि 90 दिन का और टाइम ले लो आप, उसके अंदर जो है अपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को खत्म करो। तो 270 की मैक्सिमम लिमिट है। तो अब हम देख रहे हैं कि 75% तो सारे केस जो है वो 270 दिन की टाइमलाइन तक ही को भी क्रॉस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो एनसीएलटी जो है वो कंपनीज के लिए होता है कि अगर कंपनीज जो है इंसॉल्वेंट है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है वो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होता है, ठीक है, कि अगर इनकी इंसॉल्वेंसी हो रही है तो इनको जो है उनसे डीलिंग जो है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल करेगा, ठीक है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया जो कि पूरी ओवरऑल फंक्शनिंग देखता है कि जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है वो कैसा चल रहा है, उसके लिए जो है इसको बनाया गया, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये, ठीक है। अब इसके अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के अंदर क्या है कि जो डेटर है जो दिवालिया घोषित हो गया उसको एक तरह से इम्यूनिटी मिली है कि उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता जब तक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। उसको आप कोई केस करके कि मेरे इसने पैसे वापस नहीं दिए, इसने मेरा ये ठगी की है, जो भी है, उस पीरियड के दौरान उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन क्लेम जो है वो नहीं डाल सकता कोई भी क्रेडिटर जब तक ये इंसॉल्वेंसी पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। So now let us see this topic in English. Code for creditors under IBC. So you know that Insolvency and Bankruptcy Code was established in 2016 to go for debt resolution. So when a corporate debtor declares insolvency, then the role of financial creditors from whom he or she has taken money comes into picture. So as a representative body of all financial creditors, a committee of creditors is established. So just like I was giving you example of 100 people. So imagine that there are total 100 financial creditors who have who are seeking their money back from this particular corporate debtor. So 5 of them will form a committee and they will take decisions on the behalf of all 100 people. So what is the problem with this particular model is that these 5 people will be taking the decisions on behalf of all 100 people, and their decisions will be binding upon all those 100 people even if they are having dissenting views. So that's why it is proposed that some kind of code of conduct should be there for this particular committee of these 5 people, because otherwise they will be taking a unilateral decision and there are issues with this particular committee, okay. So generally it has been seen that the financial creditors, these 100 people, out of them many people realize that whenever this insolvency proceedings will start, we will not be able to extract maximum amount from our corporate debtor. So what they do before the formation of this committee of creditors, they pull out their money and they force this corporate debtor to pay them back as much as they can garner from this corporate debtor. So what happens because of that? Out of these 100 people, if just imagine 20 people decide that they will, before the start of this insolvency proceedings, they force this corporate debtor to pay them back whatever amount this corporate debtor can pay them back. And what will happen is that only 80 people will left. The amount of 20 people will be deducted and the corporate debtor will have less valuation, and this less valuation will lead to several delays and even less money for the 80 people who are still dependent upon the committee of creditors decision, okay. So also there was visible what was visible that this IBC proceedings were exceeding the maximum time limit, the maximum permissible time limit of 270 days. So generally an insolvency proceeding has to be completed within 180 days, but in certain cases there are exceptions. The NCLT, the National Company Law Tribunal, can allow, as an adjudicating authority, they can allow that this particular case is an exception, and because of certain exceptions we are allowing you to have the 90-day grace period, and within this 270-day grace period you will have to finish the insolvency proceeding. So it was considered as an exception and not a norm, but 75% of ongoing insolvency proceedings have crossed these 270-day timeline because of this particular problem of committee of creditors who are taking too much time to take decisions, and because of
conflict between even this committee of creditors. So that's why a code of creditors is being proposed under the IBC, so that a certain level of transparency and fair working can be established in this code, in this committee of creditors. So this Insolvency and Bankruptcy Code of India, you already know about that. It was established in 2016 by a law. It provides 180 day period window. Of course, then that 90-day provision also applies to that. But it provides immunity to this corporate debtor from resolution claims of creditors during that period of 180 days, or that period of 270 days, as the case may be. So National Company Law Tribunal deals with companies in case the companies are going for insolvency proceedings. The Debt Recovery Tribunal, it pertains to individuals and partnership firms in case they are going for insolvency. And this Insolvency and Bankruptcy Code of India, it has been this IBC. This is a body, a statutory body which has been established in this code to oversee the functioning of this particular law. Okay, so they will be overseeing that how this insolvency proceedings are going on. So that's why they have this apex body has been established to promote transparency and governance in the administration of IBC. So now let us see the next topic, which is account aggregators. तो 8 ऐसे इंडिया के मेजर बैंक है जिन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क को जो है वो बनाने के लिए जो है वो हाँ कर दिया है, वो उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया है. तो जैसे कि आपको यूपीआई है ना, एक एग्रीगेटर है. आपको चाहे कोई भी बैंक में आपका अकाउंट हो, आप यूपीआई का यूज़ करते हुए उस एग्रीगेटर का यूज़ करते हुए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. समझ लो वैसा ही जो है वो आपके फाइनेंशियल डेटा के लिए भी बन गया ये अकाउंट एग्रीगेटर. अब होगा क्या, एक एनबीएफसी बना दी जाएगी, एक नेशनल बैंक फाइनेंशियल कंपनी. समझ लो, आप एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सिर्फ एग्जांपल के नाम पे, पेटीएम. ठीक है, पेटीएम ने एक ऐसी कंपनी बनाई एनबीएफसी, और उसमें क्या है, आपका जो फाइनेंशियल डेटा है, आपको सिर्फ उस पर अपना फाइनेंशियल डेटा जो है वो डालना है. और जो आपके जो है वो आप अपना समझ लो कुछ भी डेटा डालोगे, अपना पैन नंबर या कुछ भी, तो जितने भी बैंक्स हैं उसमें आपके जितने भी जो बैंक्स इसके साथ, जैसे 8 बैंक्स एसोसिएट हैं, वो वहाँ से डेटा उठा लेगा. ये जो पेटीएम का जो ये आपका बनेगा जो अकाउंट एग्रीगेटर, ये देख लेगा कि आपकी जो है फाइनेंशियल जो है हालत कैसी है, जो आपकी कैसी जो है वो परफॉर्मेंस है. तो उससे क्या होगा कि उसके बेसिस पर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जब खरीदना चाहते हो, या जो आप फाइनेंशियल कोई भी डीलिंग करना चाहते हो, तो ये अकाउंट एग्रीगेटर आपको फैसिलिटेट करेगा. ठीक है, इसको अपना पीछे से जो भी कमीशन मिलता होगा वो एक अलग चीज़ है, बट एक तरह से आपके डेटा के लिए जो है ये अकाउंट एग्रीगेटर हेल्प करेगा. ठीक है, अब उसमें क्या होगा, आपको बार बार जो है वो डेटा आपके प्रूफ नहीं देने पड़ेंगे. ठीक है, आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल्स से कोई डेटा नहीं निकालना पड़ेगा. आपका एक ही जगह पर जो है ये डेटा जो है वो एक तरह से सेफ होगा, और बैंक्स जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होंगे, तो आपका डेटा वो यूज कर सकेंगे. ठीक है, तो इसका लाइसेंस जो अकाउंट एग्रीगेटर का ऑफ कोर्स आरबीआई इशू करेगा, क्योंकि आपके फाइनेंशियल डेटा की जो है वो यूज किया जा रहा है, तो आरबीआई लाइसेंस देगा. और बैंक्स जो है वो इसमें अपना जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, अपना डेटा जो है वो आपका डेटा जो है बेसिकली वो शेयर करेंगे, और उसके बेसिस पर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो आगे खरीद पाओगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, अकाउंट एग्रीगेटर्स. तो 8 ऑफ इंडियाज मेजर बैंक्स, दे हैव एग्रीड टू join the account aggregator network because customers will be able to access their financial data very easily because of this account aggregators. So like I was giving you an example of UPI. So generally you have UPI irrespective of your bank account, you can make a transaction. Okay, so similar to that, this account aggregator will be applicable to your financial data. So currently what happens, you have to submit information or your data to one bank, then to another bank, then to another bank. In whatever financial product that you are purchasing, you will have to individually submit your account data or your financial data. But this account aggregator will just procure your data from all the banks involved who will be linked with this account aggregator company or this network, and they will be able to store your information, and you will not have to each time provide your information while you are purchasing or while you are dealing with the financial product. So of course license will be issued by the RBI, and this account aggregator framework will be established from now on. Of course there are several companies which are already in existence, and they have gone live now. After this account aggregators, they have several major banks have acceded to this account aggregators framework, so they are already live. You can already check them. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.